Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about crude oil and different types of crude oil. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So crude oil is a liquid fuel source located underground and extracted through the drilling. ऑयल जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वेरीड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड प्लास्टिक के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड ये कैसे अफेक्ट करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कंज्यूमर्स ऑन अ ब्रॉडर इकोनॉमी, डेफिनेशंस ऑफ क्रूड ऑयल एंड इट्स यूजेस। ऑयल जो है उसको हम फसाइल फ्यूल भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ एंशियंट फसाइल। The oil that we use today that is came from water based plant and animals that lived before even dinosaur existed. Oil जो है वो एक fossil fuel है which is made up of hydrocarbon left behind the animals and plants millions of years ago. Over a million of years, this remains of plants and animals were crushed and heated between the layer of rock and sand until they become a pool of oil. We call this oil as a crude oil because it is not yet refined for use. क्रूड ऑयल जो है वो बोथ हो सकता है अ फ्यूल या तो फिर अ बेस फॉर प्रोडक्ट्स. ऑयल कैन फ्यूल जेट्स, कार, हीटर एंड जनरेटर. Oil can be used to create petroleum products like tar, paraffin, wax, and lubricating oil. It can be also used to create products that even typically associated with the petroleum, perfume, fertilizers, and computers all are made up of crude oil. It is the base for plastic, so anything with the plastic is made up with the crude oil. What are impacts of crude oil uses? Modern society depends on oil to function. Without it, no economic activity takes place. जो demand है oil का and dependency on it has many impacts worldwide. The impact varies from the pollution it creates to the money it makes. फर्स्ट इज ब्रॉड इकोनॉमिक इम्पैक्ट. क्रूड ऑयल जो है वो यूज होता है नियरली इन द एवरी इंडस्ट्री फॉर समथिंग. राइजिंग कॉस्ट अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, so the cost of the living goes up. Some 26% of the energy is used in the US in the year 2020 was used in transportation sector, so higher crude oil prices impacts the industry that involves transportation. हायर अगर होगी ऑयल की प्राइस तो वो इंक्रीज़ करेगा प्राइस ऑफ दी अदर फ्यूल लाइक गैसोलीन, होम ईटिंग ऑयल एंड नेचुरल गैस. इन द ईयर 2020 के अंदर हमें देखने मिला था जो क्रूड ऑयल था वो मेड अप हुआ था 43% ऑफ द प्राइस ऑफ द गैसोलीन. फेडरल एंड स्टेट टैक्सेस मेड अप टू 22% ऑफ द प्राइस पेड अप एट द पम्प, followed by the refining cost and the profit, and finally by the distribution and marketing cost. नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक कंसर्न. बर्निंग ऑयल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमेन होता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर. दिस मॉलिक्यूल acts as a blanket over the earth, capturing the solar heat that bounce off the earth surfaces, जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टू एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स. इफ both increases the livelihood that extremes weather events will occur and intensity of this event. This includes heat wave, drought, and destructive wildlife. A warmer environment also increases ocean level, exposing more areas to erosion. Warmer air increases the spread of winds and evaporates more water that can fuel stormy weather. Types of crude oil. तो बहुत सारे टाइप्स के क्रूड ऑयल होते हैं. द अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट क्रिएट अ meant standard based on the density, which is called as API gravity, that groups crude oil into two weight classifications. Some companies also classified crude oil as medium for oil that falls between the heavy and the light level. So दो टाइप के क्लासिफिकेशन होता है फॉर द सल्फर कंटेंट यूज बाय द इंडस्ट्री एज वेल. क्रूड ऑयल इज बेस्ड ऑन लाइक स्वीट और सार बेस्ड परसेंटेज ऑफ सल्फर इट कंटेन्स. जो स्वीट क्रूड ऑयल होते हैं वो जनरली कंटेन होते हैं लेस देन 1% ऑफ सल्फर, एंड जो सार क्रूड ऑयल होता है वो कंटेंट होता है उसके अंदर ग्रेटर देन 1% ऑफ सल्फर. क्रूड ऑयल को 4 लेवल्स में क्लासिफाई किया जाता है: लाइट, हैवी, स्वीट एंड सार. ये क्लासिफिकेशन जो है
are the combination used to label the weight and sulfur content of the crude oil. For instance, you might also see the light sweet crude oil or medium sweet crude oil to define an oil. How is crude oil price? तो crude oil जो है वो प्राइस किया जाता है which is based on the spot price of the various barrels of oils, the most common of which are West Texas Intermediate, Brent Blend, or Dubai Mercantile Exchange. The basket price of the Organization of Petroleum Exporting Country, that is OPEC country, and the future price of the New York Mercantile Exchange are also sometimes quoted. What it means for investor and consumer. Consumer and investor के लिए ये एक व्यू पॉइंट हो सकता है in the different way. Investors are also consumers, but their investing side enjoys the rising oil prices much more than the consumer side does. Consumers that only uses oil for transportation dreads rising the oil prices. इन्वेस्टर के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर ऑयल का प्राइस राइज हो रहा है तो उनको प्रॉफिट मिल सकता है. There are many ways to invest in oil, but it is not like faint hearted. ऑयल का जो प्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है एंड ये डिफ़िकल्ट हो सकता है इन्वेस्टर के लिए टू प्रिडिक्ट. क्रूड ऑयल फ्यूचर्स आर अग्रीमेंट टू बाय एंड सेल ऑयल एट अ स्पेसिफिक डेट इन फ्यूचर एंड एट अ पर्टिकुलर प्राइस. बिजनेस जो है वो यूज़ करता है देम टू फिक्स प्राइस ऑयल they need for the future. Traders never take possession but simply sell the future contract before the expiration date. ऑयल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता है जो ईजियर है टू इन्वेस्ट इन रादर देन ऑयल फ्यूचर्स. दे फॉलो द प्राइस ऑफ ऑयल फ्यूचर्स बट दे आर जस्ट एज वॉलेटाइल. कुछ ऑयल ईटीएफ्स होता है जो फॉलो करता है स्टॉक ऑफ द ऑयल कंपनीज. जो प्राइस होती है वो अफेक्ट होती है बाय बोथ ऑयल प्राइसेस एंड स्टॉक मार्केट. इवन इफ द ऑयल प्राइसेस आर राइजिंग, जो ईटीएफ है वो फॉल हो सकता है इन्वेस्टर पुल फंड फ्रॉम द ऑयल कंपनी स्टॉक. नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स. तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो अफेक्ट कर सकता है कंज्यूमर्स को भी, बिकॉज इट टेक्स ऑयल टू टेक गेट देम द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे नीड. फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हायर हुआ जो रिजल्ट करेगा हायर फूड प्राइसेस एंड ग्रॉसरी स्टोर के ऊपर, तो फिर उससे भी उनको इफ़ेक्ट हो सकता है. यू विल ऑल्सो हैव टू पे मोर फॉर गैस टू गेट टू वर्क or to take any grocery or anything. Higher oil prices means that you have less money to pay for the other expenses and आपके जो luxurious items है उसको आपको कभी skip भी करना पड़ेगा. Oil prices जो है वो affect करती है at the end investor and consumer दोनों को ही. Oil prices affects the price of the most of the other commodities. As such, movement in the oil prices can trigger inflation and deflation. If you like this video, please do like, comment, share. You can follow us on Instagram at @dailycommodity. Thank you for watching.